Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute Nowgam. I am with chapter number 6. Chapter is Improvement in Food Resources. In this chapter, my topics are fishery and polyculture, its advantages. Now, yesterday in the previous lecture, disconnected, and I will first of all discuss the previous lecture, and it is with some topic here that कल हमने डिस्कस किया है कि पोल्ट्री जो फार्मिंग होती है वहाँ पे किस तरह के प्रिकॉशंस लिया जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग। कल मुझे ये डिस्कनेक्ट की वजह से इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो पोल्ट्री हाउसिंग में किस तरह का हमें हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखना है। मैंने बताया देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटेशन ऑफ वेंटिलेटर्स, ventilation takes place, there is the exchange of fresh air and fresh air, there should be a proper circulation of air, and the ventilators should be in the east west directions, and there should be your poultry house should be in the presence of sunlight. Sunlight is very important source of heat and light energy, and the chicken grows, develops very well in the presence of solar radiations, and it also enhances the increase in temperature in your housing. And another important is that the temperature should be in the poultry house, the temperature should be 55 degree to that is 75 degree Fahrenheit. ये टेम्परेचर आपके पोल्ट्री हाउसिंग में होना चाहिए। दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर शुड बी इन द पोल्ट्री हाउसिंग। इस रेंज ऑफ टेम्परेचर में देयर इज अ प्रॉपर ग्रोथ इन chicken like birds that you are in a poultry housing. Care should be taking, there should be this range of temperature, and also the floor, जो फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ द पोल्ट्री हाउस, फ्लोर जो फ्लोर उसका होता है, that should be covered with straw, घास फूस से कवर हमें करना चाहिए, हस्क या sawdust, पेपर या पेपर पीसेस से आपको ये कवर करना। इनका फ्लोर जो होता है, जो पोल्ट्री हाउसिंग का जो फ्लोर होता है, दे शुड बी कवर्ड विद द फॉलोइंग थिंग्स सो दैट, तो ये ताकि इनको ये मतलब इन पे बैठ सके एंड इट दे फील कंफर्ट ऑन दीज सब्सटेंसेस। And also that should be, अगर हम फीडिंग की बात हम कर लेंगे इन द पोल्ट्री हाउसिंग, इन द पोल्ट्री फार्मिंग, हाउ वी शुड टेक द पोल्ट्री केयर, ये सारा की सारा आता है पोल्ट्री केयर में। अगर हम दूसरी चीज पे ध्यान देंगे, इनके फीडिंग पे, इनकी जो फीडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए न्यूट्रिशियस, एंड दे शुड कंटेन द carbohydrates. Rich amount of carbohydrates are sources of energy. It should contain the proteins, fats, vitamins and minerals इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बॉयलर्स की बात हम कर लेंगे, these boilers which are high meat production, these are meat producers, they essentially need the proteins for their growth. ज़्यादा इनको प्रोटीन चाहिए और फैट्स in their diet, that means their diet should contain the
their diet should contain the fats and proteins. मैं बॉयलर्स की बात कर रहा हूँ. एंड अगर हम वाइटामिन इनके लिए देखा जाएंगे, वाइटामिन होना चाहिए इनके डाइट में ए एंड के इनके लिए. तो rather than the layers, the layers which are the egg laying birds, they also need the nutritious food that should contain the carbohydrates, proteins, but they need that because proteins are the body building nutrient and they are much needed by these boilers which yield much production of meat, and for the meat purpose we rear them. And also the जो layers होते हैं they also need the other nutrients, उनको भी चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो ज़्यादा इन पे ये ज़्यादा protein they all need these types of proteins. Vitamin A, K are essentially needed by the boilers rather than the जो इनका हमें जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड रहते इनमें, इन फीडिंग की बात करेंगे. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हम उसको कहते हैं राशन. इनका राशन जो है दे शुड कंटेन द that should be nutritive value and should contain the rich amount of carbohydrates, proteins, fat, vitamin, mineral. Therefore our birds in farming should be fed by the maize, corn, jowar, bajra, rice, grains, oil cakes, oil seeds, mustard seeds, and fish feed उनको दिया जाएगा. ड्राइड फिश फीड, dried fish feed is provided in the farming. So this diet is rich source in the proteins plus minerals. They are essentially needed. And there should be green vegetables also in the poultry farming. Their diet should also contain the green leafy vegetables. This is all about the feeding care and the hygienic care in the poultry housing. और यहाँ पे हमें पोल्ट्री हाउसिंग में हमें इस चीज़ को जब भी रात आती है, इवनिंग टाइम, at the night the house should be also lit by the source of light. वहाँ पे रात को भी लाइट होनी चाहिए. इसके वजह से the birds remains protective and they remains very vigilant and comfort in the presence of light, and their बिना किसी प्रेशर या मतलब वो सिट्रस के वजह से they easily grows and develop in the farming. तो यहाँ पे ये था. अब इसमें disease control, diseases associated with the poultry farming. There are the fungal diseases which are associated with the poultry farming. Second is the bacterial diseases. And our birds in the poultry should be protected by the following diseases. Protozoal diseases. Obviously there are we can say that viral diseases. These are the following diseases which are associated with the poultry farming. Fungal diseases, bacterial diseases, protozoal. Bacterial diseases can be controlled by giving them antibiotics, by providing antibiotics, sulfa drugs. And also the viral diseases can be controlled by giving vaccination. Before we provide them vaccination,
also help us in controlling the lot of these bacterial viral disease. वही वैक्सीनेशन हम इनको कर लेंगे एंड फंगल डिजीज से भी हम बहुत सारे ड्रग्स है केमिकल्स है या हेलमेंथस डिजीज जो वर्म डिजीज है helminths disease helminths disease which is caused by the flatworms roundworms helminths disease tapeworms roundworms are associated with them and they are present in their digestive system and also there are the ectoparasites and endoparasites ectoparasites ectoparasite, it is the sickest, the fifth, the sickest ectoparasites. Then seventh is the endoparasites. They are also the parasites which survive interior of the body and exterior of their body. That means the following diseases should be at least controlled while you are going to have poultry farming. That it is all about the previous lecture. Today I am going to discuss the following topic. It is my in this lecture fishery क्या होता है polyculture क्या होता है. तो फिशरी क्या होता है फिशरी में हम रेज अप करते हैं we raise up the shabash we raise up the fish production. You know the fish is rich source of proteins है ना बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रेंट है vitamins and minerals है ना. Therefore, for this purpose, we rear the fish in the river bodies, water bodies, in order to increase their number, to have such diet, nutritious diet, and we raise them adequate in number. This is known as the fishery. So what is the fishery? It is the occupation, business that take place in a particular area in order to raise up the fish production, and fish is the rich source of proteins, and in addition to these we get some byproducts by the fish. In the fishery cultivation we get it has the medicinal use. हमें मिलता है fish cod, आपने सुना होगा fish cod oil, and this fish cod oil is resource of vitamin A and D है ना. Vitamin A which protects us by night blindness, and vitamin D is thought to make our bones strong. Then and prevent us by the deficiency disease of rickets. And then second is of that it has some industrial use. हम यहाँ जब fish catch करते हम in the practice of the fishery, when there is the cultivation of fish, and in the view of there is the industrial use, we obtain the edible oils. Extracting from their bodies, निकाला जाता उनके body. That means fish is also source of animal oils, extracting from their body. So also they are the resource of oil as. And third is, अगर हम फिश की बात हम करेंगे, they have agriculture use में क्या है, they becomes when there is a death and decomposition of fish population, they become the organic manure,
and on decomposition and help us in cycling of the nutrients, cycling of inorganic nutrients and help us in the proper growth of vegetation. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये मेन्योर, इनका मेन्योर जो इनसे एक्सक्रीटा निकलता है या इनकी बॉडी डिकम्पोजिशन होती है आफ्टर डेथ, देन इट बिकम्स ए ऑर्गेनिक मेन्योर. तो एग्रीकल्चर यूज इस खाते है, इट इज रिच इन द inorganic nutrients. Third and fourth one in them is the, it has also the feed for animals. It is providing feed, as is जो हम dried fish होता है, अभी मैं बात कर रहा था dried fish, it is rich in proteins and it is supplied as a feed to the poultry farming, and it helps us in the proper growth and development in the birds, where they feed on dried fish, and they comes to the poultry as a feed, the best nutritive in value mineral. It is a mineral containing dried fish, rich source of minerals, fats, vitamins, proteins. And ये कहा जाता है, they have fifth one बात हम कर लेंगे adhesive in use. Adhesive in use is, I mean the fifth one, adhesive in use मतलब हम इनसे गिल्यू बनाते हैं. जो इनके जो फिश बोन्स होता है, फिश बोन्स या प्लस इनका जो स्किन होता है, उनसे हम क्या तैयार करते हैं, गिल्यूज. देन गिल्यूज हैव much adhesive properties, property. तो हम ये स्टिकिंग किसी को चिपकाना किसी चीज को, तो एज ए इनके बॉडी से हम जो स्किन होता है, इनका जो बोन्स होते हैं, दे कन्वर्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गिल्यूज आर adhesive in nature. Then it helps us in the sticking some things, as you know the importance of gillu. And it is also that it is not only the source of proteins, minerals, vitamins, it is also the source utilized in various ways. The importance of there is much more economic importance of the practice of the fishery. Now fishery is of two types. One is the fish catching. Simply one is fish catching, जिसमें हम natural water bodies में directly we catch fish by natural water bodies, water reservoirs या water bodies में हम इनको collect करते हैं. Second one is them, they are, we can say culture fishery. कल्चर फिशरी में हम आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं, हम आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज मेंटेन करते हैं और उसमें इनको फिश को कल्चर किया जाता है. देयर इज अ कल्चरिंग ऑफ द फिश in those artificial water bodies, in the artificial ponds, in the artificial lakes which are designed by the man-made design. And there is a culture that is known as culture fishery, and other is the fish catching. It is fish catching is in directly we catch by the natural water bodies, by streams, rivers, lakes, ponds, by catching with the help of the lines, with the help of nets. We catch the fish by the natural. There is a natural growth of the fish. Here is the in the presence of the man-made efforts, man-made interaction. There is a cultivation of for fish in a large scale. It has much more importance these days.
Now it is a fishery or of two types, fish catching and culture fishery. Now जो फिशरी यहाँ पे इसमें अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फिशरी में इम्पोर्टेंट है पॉली कल्चर। इसमें पॉलीकल्चर ध्यान से, एक तो हो गया मोनोकल्चर। मोनोकल्चर होता है रेयरिंग ऑफ one species in a same water body. Monoculture, we get a one crop here, हमें एक ही स्पीशीज तैयार होती है इस वाटर बॉडीज में ना। पॉलीकल्चर, पॉली मीन्स मनी, पॉली मीन्स कल्चर का मतलब होता है कल्टिवेशन। हियर इज द cultivation of many species here. Cultivation of many species, polyculture. Mono means here single and culture means cultivation. Here is the cultivation of only single species, one species, and we obtain only one crop. Here is the cultivation, that means rearing, forming of multiple number of species in polyculture. It has much more economic importance rather than the monoculture. अब मोनोकल्चर में क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हियर इज द रेयरिंग या फॉर्मिंग ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश in a same water body, say river, say lake, say artificial pond, river body artificial designed होगा, pond होगा, water body, उसमें हम क्या करते हैं, we rearing the different number of species in that. It is a polyculture, and we obtain the and feed on different foods. Polyculture is possible when they feed on different foods. यहाँ polyculture के कुछ properties हो जो हम different number of different species को rear करते हैं, फॉर्म कल्टिवेट करते हैं, उनमें होता है different, याद रखिए उनमें होता है different feeding हैबिट्स, अलग अलग खाने पीने का इनका, कुछ फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करता है, कुछ ज़ूप्लैंक्टन पे फीड करता है, कुछ डिकम्पोज्ड मैटर पे फीड करते हैं। इनका डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट है। नंबर 1, they are present in the water body in the different strata, different layers, they live in different layers of water. फर्स्ट लेयर को हम कहेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेयर को कहेंगे सरफेस वाटर, क्योंकि वाटर बॉडीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सरफेस वाटर है ना, which is directly contact with the air, and then is the middle water जो बीच में पानी हो, सरफेस, और then is the बॉटम स्ट्रेटा या बॉटम वाटर जो नीचे पानी हो। तो ये है लोअर मोस्ट स्ट्रेट ऑफ वाटर, लोअर वी कैन सी लोअर मोस्ट, इट इज द मिडल स्ट्रेट ऑफ वाटर, इट इज द सुपीरियर लेयर ऑफ वाटर हियर। तो ये अलग अलग इनका अगर हम देखेंगे पॉलीकल्चर में जो नंबर ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश सर्वाइव करते हैं सेम वाटर बॉडी में, मगर उनका जो रहना सहना हैबिटेट है वो दैट वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर 1 इज देयर फीडिंग हैबिट्स वेरियस, देयर हैबिटेट वेरियस। कुछ सरफेस डिवेलर्स होते हैं, कुछ मिडल वाटर डिवेलर्स होते हैं, बीच में पानी में रहना पसंद करते हो और खाना पसंद करते हो, फीड ऑन अदर फूड्स, एंड सम आर द बॉटम जो अंडरग्राउंड वाटर हो, डीप डेप्थ में, वो वहाँ पे हैबिटेट अपने रहने की जगह बनाते हो, वहीं पे खाते पीते, ऊपर नहीं आते, कोई आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं। दे डोंट देयर, दैट मीन्स
And third point in this is there is no competition. No competition. No competition. Here we can say NO. No competition. Competition for food and reproduction. Then there is possible maintenance. Then there is possibly a maintenance of polyculture. So this is the important feature. What should be features of the polyculture? तो polyculture में यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको. I will mention here the example now. कौन कौन से आपको इसमें पॉलीकल्चर में पहले जो सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर में कौन कौन से फिश होते हैं जो सरफेस वाटर पे रहना पसंद करते हो, वहीं पे खाते पीते हो. दोज आर द जिनको हम कहते हैं सरफेस वाटर. दे आर द सरफेस फीडर्स. सरफेस वाटर, दे प्रेफर टू लिव इन सरफेस वाटर एंड दे आर known as the surface feeders. Those are the, I will mention here the example: silver carp, and another one is the then another is the catala. इसकी जेनरिक नेम है, उधर स्पेसिफिक नेम. ये फर्स्ट पॉलीकल्चर में इट इज प्लेस फर्स्ट सरफेस वाटर पे सर्वाइव होते हैं एंड दे फीड ऑन, दे आर द, बाद में बताऊंगा सरफेस फीड. ये सरफेस फीड. दूसरा इसमें आता है सेकंड वन, ये आप नोट बुक पे मेंटेन रखिए. ये इस पे मैंने नोट्स पे नहीं मेंशन किया, आप नोटबुक पे इसको नोट करिए. देन इज द मिडल वाटर, जो बीच में पानी होता है, मिडल वाटर में आते हैं. जो मिडल वाटर होता है बीच में, कॉलम वाटर हम उसको कहते हैं, कॉलम वाटर. दे आर द कॉलम फीडर्स. वी कैन से दे आर द कॉलम फीडर्स. उनमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? दे आर द लेबियोरोहीटा, इट इज द मिडल वाटर फीडर. लेबियोरोहीटा इफ इंडियन carp. And then other example is grass carp. Grass नाम से पता चलता है, is feed on the leaves of the aquatic plant parts and their decomposed plants. Also Labioroheda is the middle column feeder. And third one in this is, फिर जगह नहीं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, third one in this here, that is the bottom surface of water. Bottom surface water, superior water, that is bottom water जो डेप्थ में हो, उनको हम कहते हैं bottom feeder. They are known as the bottom feeders. They are the bottom feeder. एग्जाम्पल मेंशन कर लूंगा इसमें. Marigal and is the another is the common carp. तो आप देखिए पॉलीकल्चर में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश आर? 1 2 3 4 5 6. Number 6 different species of the fish is rearing, feeding in a same aquatic pond. This is known as the polyculture, cultivation of different species of fish in order. It has much more economic valuable. We get a different number of species and there is high market value. मतलब असल में होना चाहे their dwelling place varies. Surface feeder, column feeders, bottom feeders. मतलब एक ही मैं यहाँ पे डायग्राम से भी दिखाना चाहता हूँ. यहाँ क्या होता है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये डायग्राम ले लिया, तो इसमें देखिए आप यहाँ पे सरफेस फीडर्स होते हैं, मिडल और बॉटम फीडर्स होते हैं. आगे आपका सरफेस फीडर्स.
ये आ गया आपका कॉलम फीडर्स, जो बीच में होते हैं कॉलम फीडर्स। ये आ गया आपके बॉटम फीडर्स, बॉटम फीडर। तो यहाँ पे 1 2 3 इट इज अ पॉलीकल्चर। इसमें आ गया आपका, इसमें आ गया आपका सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, सारा वाटर बॉडीज है एक ही वाटर बॉडीज में। तो हमने सिल्वर कार्प, देन इज द ग्रास कार्प, देन इज द लेबियो रोहिटा, प्लस इज द, इसके साथ जो अदर है दैट इज द we can say the labio rohita is the grass carp. Here is the, it is not here the grass carp, it is here the catala commonly. Here is the common carp, the bottom feeder common carp, plus is the, अभी मैंने बताया, then mrigal, they are the bottom feeders. This is the structure of polyculture. Same in a same water body there is the cultivation of number of fishes. तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि what are the advantages of polyculture. We get a number of species of fish in the same water bodies, as per it has high economic value, and we get the number of varieties of the fish production, and ensure there is a proper utilization of resources in the water bodies. That means food nutrients are properly utilized. And breeds of cow, breeds of fish, indigenous breeds, indigenous breeds of fish. One is the, जो नेटिव इंडिया के नेटिव कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, that is the catala. Another is, it is the generic specific. Second is the labio rohita. Third is the kalbasu, then the kalbasu, and is the fourth mrigal. These are the indigenous species of fish. Then there is also the exotic species of fish. These are found in the fresh water, and B part is the exotic species of fish, जो हमने बाहर कंट्री से इनको एक्सपोर्ट किया है. Then is the first one is the silver carp, that is the जितने भी कार्प से ग्रास कार्प, that is the third mirror carp. Fourth one is the Chinese carp. Fifth is the, we can say the common carp, जिसका नाम है Cyprinus common carp. These are from the outside of the country, and we possibly cultivate them in the freshwater bodies. They are cultivating freshwater bodies. आप देखिए इसमें what are the main importance of the pisciculture. What is mean by the term pisciculture? It is the culturing of the fish on a large scale. Pisciculture क्या होता है? That means culturing of fish on a large scale in order to have good yield of food production. We get here the fish meat. Fish meat is this source of
protein. It is a pisciculture. Pisces, Pisces, species. Pisces, Pisces means Pisces. It is for represent fish, and culture means rearing and caring on a large scale. So in order we have the fish production, that is the we obtain the fish meat, and fish meat is resource of proteins. It is what are the advantages, importance of fish pisciculture की क्या importance रहते हैं? Importance of pisciculture. Number one importance is there is main, so then not important, you know the importance, that is the operations. किस तरह हम operations in pisciculture, how pisciculture is managed, how it is managed. First of all, there is the sowing of crops. पहले तो हम collection करते हैं, there is a collection of the eggs. There is transportation, जहाँ पे हम इनको लेना है, cultivate कराना है, transportation. Then there is the sowing means हम कहेंगे rearing of eggs which are laid by the fish, parental fish. Then is the tending to hatching. फिर इनको हम पॉसिबली क्या कराएंगे, हैचिंग. इसके लिए हमें ब्रीडिंग पॉन्ड की तलाश है, वो है प्रॉपरली मैनेज बिफोर द नर्सरी पॉन्ड को हो या ब्रीडिंग पॉन्ड. फॉर दिस पर्पज देयर इज द ब्रीडिंग पॉन्ड, टेंडिंग टू हैचिंग. फिर इन एग्स को क्या कराना है, हैच. दिस इज द पॉसिबली देयर इज आल्सो द हैचिंग आल्सो डिपेंड्स द एनवायरमेंटल कंडीशंस. देन इज द nursing of fries, and you are nursing of fry होता है जो हैचिंग के बाद निकलते हैं, वो छोटे छोटे मतलब लार्वे, हम कहेंगे these are the larvae of fish. लार्वे जो होते हैं, they have with these fry are with yolk sac. They are associated with yolk sac. They are little in microscopic in size. Then we are rearing them, nurturing them, feeding them properly, and खास ख्याल रखें temperature, environmental factors, environmental conditions of the area. And rearing of fingerlings, जो finger size के फिर तैयार हो जाते हैं larvae fry. Rearing of fingerling size, they are of 4 to 12 centimeter in size. Then is the production of table fish, जो मारने के लायक हो, तैयार हो गई हो, बड़ी. Fifth is then there is the production. What operations is going on in the pisciculture? It is the production of table fish. It has now marketing value. Sixth one is harvesting. फिर इनको हम मार्केट के लिए बेचते हैं. Harvesting of table fish हो गए वो जो मार्केट वैल्यू बजा. अब इसका मार्केट वैल्यू आ रहा है, आप इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं हम ना, इसको we allow it to have a market sale of such fishes, and now they are the resource of food. Dear students, now here is the concept of the marine fisheries and the inland fisheries. क्या होता है marine fisheries? One is the marine fisheries, other is the inland fisheries. Marine fisheries is possible and it is natural in the ocean water, marine means sea water,
marine water where there is the cultivation of many fishes. There is a natural presence of fish, and we catch the fish in the marine water bodies by netting, by lines with boats having net से हम इनको collect करता है. We have a eco technique, modern technique, eco sound is production. Then we detect the assemblage of fish. वहाँ पे हम net बिछाते हैं, वहाँ पे हम net लगाते हैं, तो इनको हम thousands in number में collect करते हैं for the market, then sell in the market. Then it is there. Now what are the various जो इसमें है marine fishery में marine fishes. The examples of marine fish are the flying fish. Then is the Bombay duck. Other example are जो marine water में survive करते हैं, ribbon fish, eel. Then is the another is the salmon. Other example is the seal. These are the various species which are present in the marine water. Inland होते हैं जो fresh water bodies में पाया जाता है. Fresh water bodies में हम इनको cultivate करते हैं. There is the natural presence, artificial presence भी होते हैं इनके. Is the ponds, lakes में इनको rear किया जाता है. Streams, rivers दरियाओं में. Brackish water होता है which is a mixture of sea water and fresh water. Mixture of sea water plus fresh water. Sea water plus fresh water. They are found in the brackish water, in the estuaries, lagoons. These are the inland fisheries, presence of fish in the freshwater bodies. Marine fisheries is possible in the marine water, that is in the oceans में इनको हम rear करते. This is all about the fishery and the polyculture, the advantages and the main operations associated in the pisciculture. What do you mean by the term pisciculture? What are the marine fisheries and what are the inland fisheries? Though this type of fishery is maintained in the freshwater bodies. I hope you understand about this. Thank you very much.